Hello, Assalamu alaikum, dear students. Assalamu alaikum. As you know, this is class 8th. We are discussing the chapter number 14 of your science textbook, that is friction. So, dear students, we have started this a week before this lesson from your science textbook. So, we have discussed friction, how friction is caused. Then we have performed some activities in which we have shown why dynamic friction is slightly less than the limiting friction. Then we have discussed the laws of limiting friction. Different laws of limiting friction which we have proved through activities which we have performed. We have performed some activities in which we have seen that limiting friction depends upon nature of the surface in contact with each other. Then we proved that limiting friction increases the weight of the body. Then we proved that limiting friction is independent of the area of cross section. Dear students, then we had discussed yesterday, we had discussed the rolling friction. Now today we are going to discuss friction due to liquids and gases. So dear students, as you follow recapitulation, as you know that friction is a force that acts, we have discussed so many times, it is a force that acts to stop the movement of two touching things or objects. Okay, or we can say it is a force which is opposed to motion. Now friction due to liquids and gases. So dear students, as you know that we have learned that solids experience friction when their surface move related to one another. When two solids come in contact, there exerts a force. There exerts a force between the two surfaces. That force is known as frictional force. So dear students, it has been found that when a solid moves in a liquid or a gas, the surface of the solid experience friction. That means solids and liquids. So that means liquids and gases produce a friction. So dear students, as you know in nature, the body of the fish is streamlined. अगर आप देखेंगे जो body of fish जो है, that is streamlined. The body of the aeroplane, the body of the vehicles, and the body of a swimmer, it's a streamlined body. Streamlined body, as you know, streamlined body हम उसको कहते हैं. At the ends it is tapering and middle it is broad. जो middle में broad होती हैं, बीच में middle में जो broad होती हैं, और at the ends it is tapering. उसको हम streamlined body कहते हैं. So dear students, when a swimmer swims, as you know, when a swimmer swims in water, he tries to streamline his body as far as possible. अब जब भी swimmer कोई स्विम करता है वो भी अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाता है, जैसे टेपरिंग एट एंड्स इट बिकम्स ए टेपरिंग एंड मिडल इट इज ब्रॉड. सो इसी तरह आपने देखा होगा द बोटमैन जो होता है, द बोटमैन मूव्स हिज ओर इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑन अप्रोचिंग द क्लोज द शोर. जब हम नज़दीक शोर पे पहुंचते हैं, जो बोटमैन वो जैसे जो बोट होती हैं वो उसकी स्पीड जो आगे होते हैं, तो जो बोटमैन होता है वो अप्रोच करता है इसको इन रिवर्स डायरेक्शन. दिस इन टर्न डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बोट एंड इट इज safe to reach the shore. Okay, now dear students, we will see friction due to water. Water में कैसे होते हैं friction है. Before we discuss the friction due to water, let us know about the streamlined body or streamlined shape of a body. So as you know the shape of a body, मैंने आपको already कहा था कि shape of the body which is tapering at the ends and middle it is broad, that is called a streamlined body, offering minimum amount of friction. Example आप देख सकते हैं, the body of ship and a boat आप देखते हैं is streamlined so that they experience minimum amount of friction while moving through water. वाटर में उनकी जो streamlined होती है, बोट की भी होती है, शिप की भी होती है, फिश की भी होती है, या स्विमर होती है. In nature, the body of the fish is streamlined such that they experience least amount of friction in water. Okay, when a swimmer swims in water, he tries to streamline his body as far as possible so that he experience least friction due to water. जो भी कोई swimmer होता है वो अपनी body को streamline करता है क्योंकि so it is possible that he experience least friction due to water. Okay, now dear students, as you know that it is for the same reason that big ships fire their engines in reverse direction in order to slow down or stop as the water offers very small friction. Okay, now ये आपने देखा है कि friction जो है water में भी है, but जो water में friction होती है वो less होती है as compared to solids में. इसी तरह हम देखेंगे अब air में friction due to air. So friction due to air is so small that we hardly feel it. air में friction है, जैसे अपने हाथ को हम ऐसे मूव करेंगे हम इसको फील नहीं कर सकते हैं, बट इसलिए वी कैन से दैट वी हार्डली फील इट. हाउएवर फॉलोइंग एक्टिविटीज विल, ये हम एक्टिविटी आप दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जो एयर है इट एक्सर्ट्स है फ्रिक्शन, इसमें भी फ्रिक्शन है. आप देख सकते हैं सिंपली, आप देख सकते टेक ए फुल शीट ऑफ पेपर, आपके पेपर लाओ एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन
फ्रॉम द लेवल ऑफ योर हैंड। यहाँ से हम एक शीट लेंगे तो उसको हम फॉल करेंगे नीचे, तो आप देखेंगे कि वो एंड अलाउ इट टू लीव योर हैंड, रिकॉर्ड द टाइम इन विच द शीट ऑफ पेपर रीचेज द ग्राउंड। आप ये देखिए कि इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में। नाउ द सेम टाइप ऑफ शीट, यही शीट हम नाउ क्रिम्पल द शीट द फॉर्म ऑफ अ बॉल। अब हम इसको ऐसे क्रिम्पल करेंगे, इसको बॉल बनाएंगे शीट को, जैसे हम इसको करेंगे। सो इट एंड अलाउ इट टू फॉल डाउन फ्रॉम द लेवल ऑफ योर हेड। इसको हम वैसी लेवल पे छोड़ देंगे जहाँ से हमने शीट किया है। नाउ यू विल आल्सो रिकॉर्ड द टाइम इट रीचेज टू ग्राउंड। आप यहाँ से ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इसको इतना कितना टाइम लगे। सो वी नोटिस दैट द क्रम्पल बॉल क्विकली रीच द ग्राउंड लेवल। ओके, ये उससे जल्दी आएगी। आप देखना जो हमने शीट डाला उसमें अगर सपोज 10 या 15 या 20 सेकंड लगे, तो जो ये हमने इसको बॉल बनाए इसको सिर्फ 2 या 1 विद इन 1 सेकंड इट रीचेस द ग्राउंड। सो इट इज बिकॉज व्हाई इट इज बिकॉज व्हेन द शीट इज फ्लैट, जब शीट फ्लैट था सो इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली इसने जो सरफेस एरिया लिया उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, विच एक्सपीरियंस अ large force of friction due to air and hence shows and slow down. However, when the sheet is crumpled in the form of wall, it has a very small surface area. इसका small area जो है इसने occupy किया वो small था. The small surface area experience less force of friction due to air and hence reach the ground very quickly. Okay, ये भी आप देख सकते हैं, या सिंपल में आप देख सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है नेचर हैज, फर्स्टली आप देख सकते हैं नेचर हैज शेप्ड द बॉडी ऑफ बर्ड इन सच। आप बर्ड देखेंगे उनकी बॉडी जो वो भी स्ट्रीमलाइनेड है, हैंस दे कैन फ्लाई विद अ लॉट ऑफ स्पीड, दे ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड दे कैन फ्लाई विद अ लॉट ऑफ स्पीड। बर्ड्स जो है, द बॉडी ऑफ एरोप्लेन जो है ये भी स्ट्रीमलाइनेड है, हाँ, सो देयर द एयर ऑफर्स लीस्ट पॉसिबल फ्रिक्शन। ये भी है द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल स्ट्रीमलाइनेड, सो देयर द एयर। ये भी सारा जो जितने भी मूव करते हैं एयर में करते हैं, तो इनकी सारों की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइनेड बॉडी है। तो स्ट्रीमलाइनेड बॉडी से क्या है, दे ऑफर लीस्ट फ्रिक्शन सो दैट दे कैन मूव फास्ट। ओके, आपने देखा होगा तो मीटियोर्स जिनको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, हम कभी ड्यूरिंग नाइट टाइम हम देखते हैं वो, जैसे हम बोलते हैं वो शूटिंग स्टार जो होता है, फिर वो मीटियोर्स वो जल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। द मीटियोर्स एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एट ए वेरी वेरी हाई स्पीड। उनकी स्पीड बहुत होती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। एट सच स्पीड द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्सट्रीमली हाई। फिर जो फ्रिक्शन जितनी भी वो तेज आएगी उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा ये एयर की होगी। ड्यू टू दिस हाई फ्रिक्शन द टेम्परेचर ऑफ द मीटियोर राइज टू सच अ हाई डिग्री दैट दे कैन कैच फायर। फिर वो जल जाते हैं। इसी तरह जो स्पेस शिप्स जो है, जिसको हम स्पेस में ले जाते हैं, स्पेस शिप्स जो है दे आर प्रोवाइडेड with head shield at their heads. So it is because when the spaceship enters the atmosphere, then due to friction of the air, they can catch fire, much like the meteor. Thus, to prevent their burn out, a shield is provided. उनके ऊपर एक shield होता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसकी भी स्पीड बहुत तेज होती है, उसकी भी जो शेप है वो भी स्ट्रीमलाइनेड है। ओके, नाउ here we conclude